हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद विल्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंसेस की और सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। सो फ्यूचर सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के लिए जो कि हमने आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में करना है। अभी तक हमने एक्शन नहीं सर अंजाम दिया, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद अगर हमने करना है और अगर हम उसका जिक्र करना चाहें तो हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि फ्यूचर सिंपल हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about future simple tense. So let's start. The usage of future simple tense is that we use it to talk about an action which will take place or occur in future. यानी एक ऐसा अमल जो कि फ्यूचर में होगा उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तमाम ऐसे एक्शन जो आपने अभी तक नहीं किए आप फ्यूचर में करेंगे, बेशक 2 मिनट बाद कोई एक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। The identifications of future simple tense are ga, gi, ge. At the end of the sentence you will find ga, gi, ge in Urdu. So you have to understand that this is future simple tense. The subjects which we have to use in future simple tense are I, we, you, they, he, she, it, or any name. Now let's talk about affirmative structure. We have to use subject, will or shall, first form of the verb or fresh form of the verb, and object, full stop. Now there's an important note. Shall has been obsoleted in modern English and now we use will with all subjects. Yes, this is true that nowadays in a modern English we use will with all subjects, but yes, in the books sometime you will see the usage of shall, which cannot be 100% outdated or obsoleted. So you might see somewhere shall, but mostly people use will with all subjects. Now let's see the examples. The example number 1 says I will write article on different topics. मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूँगा। वी विल प्ले सॉकर ऑन दिस संडे, हम इस इतवार को फुटबॉल खेलेंगे या सॉकर खेलेंगे। वसीम विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन मार्च, वसीम मार्च में दुनिया का विजिट करेगा, दुनिया का चक्कर लगाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव. In negative we use subject, will and not. Some of the time we use short form of the word, these two words, will not, which is won't, but will not is better to write. First form of the verb and object. अच्छा, future simple का negative बनाने के लिए subject, उसके बाद will के बाद not लगाते हैं। शॉर्टकट में हम इसको यानी इसका contraction यूज़ करते हुए will not का won't भी यूज़ करते हैं, लेकिन will not यूज़ करना बेहतर है। उसके बाद verb की first form and object। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई विल नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल नहीं लिखूंगा। वी विल नॉट प्ले सॉकर ऑन दिस संडे, इस इतवार को हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, सॉकर नहीं खेलेंगे। सॉकर और फुटबॉल एक ही बात है। वसीम विल नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन मार्च, वसीम मार्च में दुनिया का चक्कर नहीं लगाएगा या दुनिया घूमने नहीं जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. The interrogative structure is will, subject, first form of the verb, object and question. इसका सवालिया बनाना बहुत ही आसान है, हमने सिर्फ विल को जुमले के स्टार्ट में लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, विल आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्या मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूंगा। विल वी प्ले सॉकर ऑन दिस संडे, क्या हम इस इतवार को सॉकर खेलेंगे यानी फुटबॉल खेलेंगे। विल वसीम ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन मार्च, क्या वसीम मार्च में दुनिया घूमने जाएगा। सो दिस वॉज future simple. We have discussed affirmative, negative and interrogative, and I hope that it is very simple to understand. Thank you. So hope you liked the video, and if you have any question regarding this tense, you can just write your comments there in the comment section and I'll get back to you. Thank you.